आई थिंक पहले मुझे ये बताना तो पड़ेगा ही कि गए हफ्ते रमाकांत टैंडन जी और उषा जेकब ने काफी बेहतरीन तरह से ये सेशन को संभाला है, और देयरफॉर आप सबकी तरफ से और मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद उनको। एंड आपको काफी एंगेज करके प्रोग्राम को आगे बढ़ाया है उन्होंने, सो इसके लिए मैं आभारी हूँ। दे आर ऑल्सो वेरी गुड फ्रेंड्स। पिछले प्रोग्राम से हम लोग साथ में ही हैं, पिछले 2 सीजन से हम लोग साथ में ही हैं। सो I thank you for placing the trust and giving us that opportunity. अरे नहीं उषा जी, come on, not at all, not at all. Thank you very much उषा जी। एंड रमाकांत जी आज आए हैं। रमाकांत जी तो ठीक है, आने के बाद we will also talk to him. Anyway, so अभी क्या करना है हमको, यानी हम सभी को ये ख्याल में रखना है कि this is a tutorial, this is a karaoke tutorial. तो ऐसा नहीं है कि कोई एक बंदा एक्सपर्ट है और काफी लोग कुछ नहीं जानते, ऐसा नहीं है। बट इट इज अ प्रोग्राम वेयर वी शेयर द एक्सपीरियंस। हमारा जो कुल मिला के जो अनुभव है वो उसको शेयर करते हैं, उसमें से सीख लेते हैं, एंड दैट इज द पर्पस। एंड वंस अगेन देयरफॉर थैंक्स टू सीनियर्स टुडे फॉर देयर सपोर्ट। तो इस सिलसिले में we will be covering things like how to sing, क्या karaoke क्या होता है, and at the same time उसमें क्या technical कुछ equipments हमें use करना पड़ता है, तो उसकी जो जानकारी है उसको हम share करेंगे। और काफी लोग अपने ढंग से कुछ recording करते होंगे या फिर Zoom में भी present करते होंगे, तो उसका सब क्या है, what is the the proper way जो है वो कैसे करना चाहिए ताकि ऑडियो एंड वीडियो ठीक से ब्रॉडकास्ट हो सके, एंड एट द सेम टाइम आपका जो गाना है, आपका जो गायन है वो ठीक से लोगों को सुनाई दे। दैट इज द पर्पस। सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट टेक्निकल मैटर्स ऑल्सो। तो ठीक है, तो जरा आगे बढ़ते हैं। एंड हमने जस्ट टू रिकैप प्रीवियस सेशन, यानी लास्ट वीक नहीं, उससे पहले वाले जो हफ्ते में वी हैड स्पोकन अबाउट द 4 एलिमेंट्स ऑफ अ सॉन्ग, ताल, लय, सुर और पिच, एंड ऑफ कोर्स भाव, राइट। सो TLSB ऐसा भी याद कर सकते हैं हम लोग। TLSB, T फॉर ताल, लय फॉर L फॉर लय, S फॉर सुर और पिचिंग, and of course B for bhav. So that way also we have seen that, and then we also saw that गए हफ्ते हम लोग ये भी बात किया कि एक गाने में कैसे 4 components हो सकते हैं, meaning that there is a lyricist, there is a what you call music director, then there is a singer, and then of course there is a situation or the acting or the picturization of that song. तो हर एक गाने का ये जो 4 कंट्रीब्यूटर्स होते हैं हर गाने में, एंड सभी का जो ये रहता है, क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन तो रहता ही है फॉर अ सॉन्ग टू बिकम अ फेमस सॉन्ग और अ मेमोरेबल सॉन्ग, एटसेट्रा एटसेट्रा, राइट। तो दिस इज व्हाट वी सॉ इन द लास्ट सेशन। अभी हम आगे जाके लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज कैरियोके। व्हाट इज कैरियोके? यानी कैरियोके इज अ Japanese terminology or a Japanese word that refers to a performance in which the person sings along with pre-recorded music. Yani karaoke by definition is something where the voice is not available, but the entire background music and the song track is available. Yani in the meaning of karaoke in Japanese also means that you are singing with an empty orchestra, or it can also mean it's an empty orchestra. Yani empty in the sense that it does not have the voice. Voice jo hai. So that is why it says that karapo in Japanese means empty, and a shortened form of the word okasutra means orchestra, right? So
आपको, आप सभी को आपका जो ऑडियो है, आप सभी को आपका जो ऑडियो सेटिंग है उसको आप म्यूट में रखिएगा, प्लीज म्यूट में रखिएगा, ताकि घर पे जो बातचीत होता है या डिस्टरबेंस जो भी होता है वो काफी लोगों को सुनाई न दे, ठीक है। नाउ आई कैन ऑल्सो म्यूट ऑल ऑफ यू, बट यू नो इट इज कॉल्ड डिसिप्लिन, है कि नहीं? आई मीन there is a discipline that I can mute you because I am the co-host or whatever, but अगर आप ही करते हैं तो ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है ना? हाँ, ये देखिए आप, अभी क्या है कि यू ऑल हैव स्विच्ड ऑन द जूम मीटिंग एंड देन आप कुछ और भी काम करते होंगे घर पे, तो उसका जो आवाज जो है, वो डिस्टरबेंस जो है, वो सभी को सुनाई देता है। तो अगर आप कुछ प्राइवेसी बात भी कर रहे हैं घर पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में, वो भी हमको सुनाई देगा, तो वो चाहिए नहीं ना हमको, वी डोंट रिक्वायर दैट। एंड आपको भी तो नहीं चाहिए कि आपकी बातें जो है वो सुनाई दे सबको, ठीक है ना? So therefore kindly switch off or keep your audio in the mute. Okay, so thank you. So we were talking about the term karaoke. So it's a combination of the word karapo and orchestra. Okay, so that's how it is. And the first karaoke machine called the Juke 8, the Juke, Juke, Juke 8, was built by the Japanese inventor, and he was also a musician called Daisuke Inao. Daisuke Inao था उनका नाम। And in way back in 1971, यानी हम लोग जब नॉर्मली वो कॉलेज से या स्कूल से जब पास आउट करते हैं, तो उस साल में 1971 में तो मैं तो स्कूल से भी नहीं पास आउट हुआ था। Okay, so I am now feeling bad that हमको कैसे karaoke was not made available even while we were in school and college. Then possibly we would have been much better singers today because we would have been practicing on karaoke for the last 30 years or so. So this was invented in 1971 by Daisuke Inao. But क्या हुआ कि it's a twist of fate, you can say, that there was a Filipino from Philippines called Roberto del Rosario who holds the machine's patent. तो उन्होंने 1975 में karaoke sing-along system. So he holds the 1975 में patent था उनका, तो 1975 तो मैं तो कॉलेज में ही था तभी, ठीक है ना? So then it would have been nice if Mr. Roberto del Rosario had met me, or if I had met Roberto del Rosario in 1975. In that case, I would have been an expert now in karaoke singing. Okay, so in 1975 he patented the machine, and because karaoke is a Japanese word, possibly he thought of it as a normal English word, so he called it the sing-along system. And incidentally, हमने जब पहले ये जो karaoke system हमने खरीदा था, तो at that time it was called per sang sing along, and per sang sing along used to come from Malaysia, and correct. So somebody has said he passed out only in the 10th from 1975. तो मैं क्या करूं sir, I am senior to you, so ठीक है। So I passed out. I was in my final year BCom honors in Bombay University. I was doing my second junior BCom or BCom first year, whatever they call it. Yeah. So anyway, so 1975, way back in 1975, it was born. So we came to understand it only in the 2000 era, right? 2010, 2008, and things like that, right? So that is the long and short of it. And then, so what do we have today? So we have today MP3, which means audio. MP3 is audio and MP4 is video. So we have MP3 audio tracks and we have MP4 audio tracks, video tracks. Okay. So these karaoke comes in two formats basically, and I have found personally, and it is my only opinion, that when you have an MP3
audio track, normally it sounds better than when you play a video track on MP4. This is my personal view. I may be wrong. You may not agree with me, etc. It's okay, right? Because possibly in a video track there is a video content. यानी वो जो कोई लोग क्या करते हैं कि they show some scenarios from foreign countries, or they show some waterfall, or they show some birds, butterflies and all that. Video track में, video karaoke track में. So then it enriches it makes the file a bigger file, but the audio quality gets affected. तो ये मेरा अनुभव है, पर्सनल अनुभव है, and I have found that मैं जरा जो MP3 का जो ट्रैक्स होते हैं उसमें मेरा दिल अच्छा लगता है, यानी मुझे गाने में भी अच्छा लगता है. Though of course it is more difficult because then you have to have your lyrics by the side and you should be very familiar with the song. ये सब चीजें हैं MP3 में, but अगर आप वीडियो ट्रैक के साथ गा रहे हो तो बहुत आसान हो सकता है, because then it will prompt you, color will change accordingly and all that, but you have to be careful because some of these tracks are not perfect, so they may mislead you. So आपको ताल के साथ जाना पड़ता है rather than the color changing of the lyrics, because that can mislead you and get you off track. तो ये जरा उसमें dangers and जरा क्या बोलते हैं do's and don'ts के हिसाब से that also happens. And of course video tracks are more friendly because they are easy to use, है कि नहीं? Because आपको दिखाई देता है कि wordings कैसे change होता है, या फिर कहाँ पे interlude आता है, कहाँ पे break आता है. And some video tracks also give you 4, 3, 2, 1 or 3, 2, 1 or 1, 2, 3, 4 kind of timing they give you, so that then you can take off and land as per the timings given in the video track. So sometimes video tracks are preferable. For beginners, video tracks are preferable. आपको video track के साथ ही जाना अच्छा लगेगा, ठीक है ना? And then as I said, अगर आपको audio tracks के साथ गाना है तो आपको गाने का पूरा जानकारी होना चाहिए, and you must have the lyrics sheet in front of you, and the lyrics should be according to the track, not according to the original song. Because कोई tracks में क्या होता है कि they will cut one last line from the मुखड़ा at the end because इसको जल्दी खत्म करना है, या फिर कोई I mean there can be variations. तो आपको कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ और गा रहे हैं और ट्रैक कुछ और ही इंडिकेट कर रहा है, ठीक है ना? So then it will be a huge failure on the part of us actually. And so thank you. A lot of new friends have joined us. Dr. Lieutenant Colonel Ramaya, Sita Jayaraman from Canada, and several other old friends have joining us. Mr. Jagdish Jagtiani has raised his hand, so I would like to take some pause here and request him to speak, please. Yeah, one more problem occurs when the karaoke tracks, video tracks are playing. Some people, different karaoke track makers have different spellings for every word. So some people pronounce it exactly as per the word written. So that distorts the sound. Correct. Just my input, yeah. Yeah. तो मैं क्या करता हूँ जगदीश जी, यानी मुझे क्या बोलते हैं उसको, I mean, I don't know how to, doubtful Thomas or whatever I don't know what you would like to call me. So out of abundant precaution, what I do is even if I am to play the video track, I still keep my lyrics in front of me. Yeah. I still keep my lyrics in front of me because I don't want to go by that. So that's a good tip given by Mr. Jagdish, one of the very good friends in this karaoke group, and he is also very practical. He gives you a lot of suggestions and काफी उनका जानकारी भी है. He's quite an insightful person. Thank you, Jag. And so that what he says is also true. कि कभी-कभी there is a gentleman called one second. I know him. He's a friend of mine also. उनका जो karaoke tracks रहता है, तो उनका जो क्वालिटी ऑफ ट्रैक्स है वो काफी अच्छा है, बेहतरीन है इनफैक्ट. बट क्या है उनका एक प्रॉब्लम कि द वे वी प्रोनाउंस अ वर्ड, ही विल स्पेल द
लिरिक्स। यानी अगर आपको कहना है कि आई मीन कोई भी वार्ता हो सकता है, इट कैन बी अ वर्ड लाइक देखा है पहली बार और वॉट एवर इट इज। सो देखा है पहली बार, सो दैट पहली विल बी PHLEE-E। तो वैसा लिखा जाता है कभी कभी। तो विद द रिजल्ट आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये क्या पहली है या क्या वर्ड क्या है, एंड इट इज इन इंग्लिश sometimes, right? Yeah, I think the name of the gentleman is Suhailur Rahman. His tracks are absolutely good quality. I can guarantee you that. But then उनका जो wordings है, यानी उनका जो lyrics का लिखने का जो तरीका है, it can be quite disturbing. Right, sir, right. Okay. So anyway, Triloknath Dubey ji has risen his hand. So आप बोलिए sir. दुबे जी, आपको अनम्यूट करके बात करना पड़ेगा। I have observed in some of the tracks, I will say 5% maybe, that the tal is also wrong. Wrong means the sum where from they should take in 1%, 1-2% cases. But maximum I have found it, sometimes it becomes faster than वो ताल आपका जहां से उठाना है वो फास्टर हो जाता है. And the second problem is between two sentences there is a pause of 4 seconds. Sometimes they will not give that pause. And if you are singing the original song, the pause is there. You are practicing according to the original song. You have practiced. Suppose one song I have practiced many times and I am singing with karaoke. I will feel it difficult. That pause is missing. वो pause है ही नहीं. ये दो डिफेक्ट बहुत ज्यादा दी. करेक्ट. त्रिलोकनाथ जी, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू वेरी मच. सर, इसका ये यानी इसका कोई सॉल्यूशन तो नहीं है क्योंकि वी कांट कंट्रोल व्हाट द कैरियोके ट्रैक कम्स. बट मैं क्या करता हूँ, अगेन व्हाट आई डू इज व्हाट आई कैन से. तो मैं एक गाने को काफी रिसर्च करता हूँ, मीनिंग दैट ये गाने का कौन कौन से ट्रैक्स अवेलेबल हैं, एंड हर एक ट्रैक मैं प्ले करके देखता हूं कि उसका जो सम ट्रैक्स गो फास्टर, यानी अगर वो गाने का लेंथ है, टोटल लेंथ इंक्लूडिंग फ्रॉम द हमिंग स्टार्ट टू द एंड ऑफ द व्हेन द तबला और द tal stops, comes to an end. Let's say if it is 4 minutes and 20 seconds. Now the same song with the same length, they will do it in 4 minutes. So what does it mean? That means the track is going faster, and with the result you find also that आपको जरा जल्दी से गाना पड़ता है. You are being hurried up because of the track itself. So then you are into a problem. Secondly, like Mr. Dubey said, the original song or the track itself could be erroneous, meaning that there could be some problems or there could be some errors in the track compared to the original. तो ऐसा भी होता है. तो आपको जो अच्छा है, best of the best आपको लेना पड़ेगा. And in some, I am also seeing that it is all keyboard recreated. तो वो बोलते हैं कि digitally recreated track and all, but वो क्या करते हैं actually उसको digitally recreate करते हैं, तो it doesn't sound like the original. यानी keyboard में play करते हैं, they more or less reproduce all the instruments, but it is not near the original, so you can make out कि अरे नहीं, मजा नहीं आ रहा है इसमें, इस track में, right? So you have to be choosy, you have to have very high standards, so that then you don't compromise, isn't it? है कि नहीं? Otherwise, you will end up choosing a wrong track, you will end up choosing a inferior track, you will end up choosing a wrong quality track as well. Jamila ji, welcome, आदाब. आपको आपका स्वागत है. बोलिए, आपने हाथ उठाया है तो बोलिए. Good evening to you and good evening to everybody. मैं क्या सोच रही थी, जब हम लोग ट्रैक होता है, ओरिजिनल सॉन्ग में दो बार आते हैं वो लाइंस, पर ट्रैक में एक ही बार आता है कभी. Agreed. Yeah, so completely agreed. हाँ, 2 times आता है, पर इस कभी ट्रैक में एक ही बार आता है, जल्दी खत्म हो जाता है. So 2 times गाने से अच्छा लगता है actually. अच्छा लगता है. हाँ,
Yes, So that's standing example for Jamila's suggestion is what song which I am now concerned with is Ek Haseen Shaam Ko. Now, ye gaane mein, if you see some tracks, as Jamila ji rightly says, at the end and at the beginning also, Ek Haseen Shaam Ko, Dil Mera, isn't it? Ek Haseen Shaam Ko, Dil Mera Kho Gaya. It is repeated twice, both in the beginning and in the Mukhda at the end. So there are some tracks where it comes only once. एंड इमीडिएटली उसके बाद वो क्या बोलते हैं उसको दो अनुपल्लवी जो मैंने बताया था विच कम्स पहले अपना हुआ करता था अब किसी का हो गया एक हंसी शाम को दिल मेरा खो गया. Then again it is repeated. Ek Haseen Shaam Ko Dil Mera Kho Gaya. That's how the song ends. But there are tracks in which, as Jamila ji very rightly pointed out, there is no repetition of the second line. So second line repeat करने में जरा मजा भी आता है. I mean it gets reinforced. है कि नहीं? And that's the mukhda. That's the main heart of the song is that mukhda part actually. So that is true. So ठीक है. So these are all the variations. Anyway, so then there are video tracks where the lyrics will not appear. Or there are video tracks where the lyrics will be standard. It will appear in the screen like a lyrics. आपको decide करना है कि क्या कब गाना है वगैरह वगैरह. ठीक है ना? So these are also the variations. In such tracks, the track could be good, but आपको help नहीं करेगा because the video, the lyrics don't move. Or the lyrics are fixed. Printed on the screen. तो आपको काफी मुसीबतें झेलने पड़ेंगे because of that. Therefore, it is very important for you. So therefore, जो भी जैसा भी हो, tracks कैसा भी हो, what am I trying to drive home? कि आपको गाने से पूरा का पूरा familiarity होना चाहिए. बस. This is the only lesson for us. ट्रैक्स कैसे भी हो हमको क्या लेना देना अभी ठीक है we'll choose that which is good ठीक है ना तो but for beginners and for those people who have difficulty in hearing and trying to sing and difficulty in reading from the lyrics sheet in front of you video tracks are the best. Okay, right, now we move on quickly. Now, as I said, there are some tracks which provide the timing. Okay, 4, 3, 2, 1, start kind of thing. Now, that can be misleading, but that can also help. It depends on you, really, isn't it? And so there are video track publishers. I don't want to name any particular name because this is a public show. This is a public domain program. And agar maine XYZ ka naam liya, to it will look as if I am trying to support him or promote him. So I don't want to be seen that way. But there are individuals who are doing a very good job. 90%, 95% of their tracks are good. But they also have about 5 to 10% of the tracks which are really not the best. I mean, there are better ones available. Let me put it that way, right? So ye hai iska variation in the sense that, so it is always not a good advice ki, acha, this is a track by Mr. XYZ, so ye acha hi hoga. No, you don't have to conclude that way, right? Because there could be a track by ABCD, which could be better than XYZ for that particular song. So it's very important, आपको ये जरा decide करने में आपको काफी दिमाग का जो है आपको लगाना पड़ेगा. And my apologies, Sharma ji, I have to go. Okay, ठीक है. Lakshmi Ravichandran ji from Bombay, my old friend, our old friend is leaving. ठीक है, no problem. Okay. Now there is one technical thing I would like to share with you. ठीक है ना? Now, what is the technical thing? One, as I said earlier, there are online portals like Smule and Star Singer, where the tracks are available and you can put your
earphone and start singing and record. And then you can share with everybody. So this is one method, which is very good. I appreciate the Smule founders and the क्या बोलते हैं Star Singer founders, because they have done a fantastic job. Hats off to them really for making karaoke singing so popular, because everybody. अच्छा ठीक है, thanks Jagdish. Yeah, but Suhailur Rahman was a great guy. I mean, he's a good friend of mine, and I message him very often. So it has been taken over by K4U Tracks, is what Mr. Jagdish Jagdiani is messaging me personally. That's okay. That's a public domain information. No problem. Thanks for that, Jag. And so there are online portals like Smule and Star Singer. So as a starting, I am not a great admirer of Smule or Star Singer. I must admit that. क्योंकि मुझे personally ये experience हुआ है कि when I sing on Smule or Star Singer, there is a lag. There is a lag of a few seconds, with the result that the end recording जो है, final product, मुझे लगता है अरे मैंने ऐसा गाया, I am making a mistake or what? ये क्या हो रहा है मेरे को? So then it is self-defeating. So मैंने बंद कर दिया है ये Smule and Star Singer. Maybe there is no problem today, I don't know, but I would prefer to go by the original track or the video track which is available on the net. ठीक है ना? तो इसमें ये क्या टेक्निकल पॉइंट मैं क्या बता रहा था कि now ऐसा भी है, ऐसा काफी होता है कि when there is a track available, whether MP3 or MP4, that is a different matter. ठीक है ना? Now when the track is available and when you are going to start singing with that track, you realize that अरे ये तो मोहम्मद रफी साहब का गाना है, मेरा तो रेंज ऐसा नहीं है, मेरा तो मुकेश जी का रेंज है, तो मुझे ये मोहम्मद रफी वाला, हाँ करेक्ट, तो मुझे ये ऐसा लगता है कि मुझे ये मोहम्मद रफी वाला गाना जो है, ये मुझे, lot of you are messaging me, I am getting distracted यार. हाँ, तो विजय कृष्णा, I am talking about that only यार. Come on यार, you are beating me, you're pulling the carpet from under my leg यार. Come on. So yes, so that is the point I am on actually, विजय कृष्णा. Thank you for that. तो कभी ऐसा काफी होता है, एटलीस्ट मेरे केस में तो काफी हुआ है कि मुझे ऐसा लगा अरे यार ये मन्नाडे जी का गाना जो है ये जरा मेरे से नहीं होगा. कसमे वादे प्यार वफा सब और whatever it is, especially the antaras are little difficult for me because होगा नसीबा, so all that can be a little tough for me or little difficult for me. So now I want to reduce the pitch, I want to reduce the scale, I want to reduce the scale. अभी YouTube में जाके तो कुछ हो नहीं सकता. मैंने यानी if it is in the XYZ portal of Mr. So and so who is posting that particular track, I can't directly reduce the pitch. और ऐसा भी कभी होता है कि as I said, ये गाना तो it should run for minimum 4 minutes 20 seconds, but ये जो ट्रैक अच्छा है, but it is ending in 4 minutes itself. यानी मुझे फास्ट गाना पड़ेगा, जल्दी से जल्दी गाना पड़ेगा, and it may not sound like the original, because जब ये स्टैंडर्ड गाना अगर आप स्लो गा रहे हो या फिर स्टैंडर्ड गाना अगर आप फास्ट गा रहे हो, then उसका जो मजा जो है वो चला जाता है, इतना मजा नहीं आता है. Because सुहानी रात ढल चुकी is the speed of the song. Now I cannot sing सुहानी रात ढल चुकी ना जाने तुम कब आओगे. No, you say अरे साहब कहाँ भाग दौड़ कहाँ कर रहे हो आप लोग. फास्ट ट्रेन मत पकड़ो, स्टैंडर्ड ट्रेन पकड़ो. बॉम्बे में स्लो ट्रेन मत पकड़ो, फास्ट ट्रेन मत पकड़ो, स्टैंडर्ड ट्रेन जो है वो पकड़ो. That's what you will tell me, isn't it? So there are tracks which will go fast or which will be slow, or where the pitch of the song originally itself is beyond your reach. Baiju Bavara, etc. etc. ब्रह्मचारी, दिल के झरोके में, शुरू में तो अच्छा लगता है दिल के झरोके में, उसके बाद आप अंतरा जरा गा के देखिए, कल तो अरे बाबा मुझसे नहीं होगा बाबा. ठीक है ना? So now you want to reduce the scale.
So there are online softwares available, not free, not downloadable, but some of them can be downloadable. Some of them are free. You can download that software or that app or whatever it is in your laptop. And you can download this track which you have, MP4 track, convert it into MP3 track. There are softwares available for that. Very easy. Within seconds, it will convert MP4 into MP3, यानी ऑडियो ट्रैक्स. तो वो जो ट्रैक है उसको आप ये सॉफ्टवेयर के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और उसमें है प्रोविजन सेइंग इफेक्ट्स और व्हाटएवर इट मे बी, जो भी ड्रॉप डाउन मेनू होगा उसमें, तो उसमें आप जाके चेंज पिच, चेंज स्केल, चेंज टेम्पो आप कर सकते हो. एंड देन इट विल itself on its own suggest some 0.05 which is called as a half semitone. It will change the pitch downwards by 0.50, which you can change it into 1.00 or 1.50, but the song will lose its charm if you do more than 1 or 1.5. अगर आप उसको टैम्पर करते हो, आई वुड कॉल इट एज टैम्परिंग विद द सेटिंग्स. अगर आप टैम्परिंग के साथ, सेटिंग्स के साथ टैम्पर कर रहे हो, तो गाने का जो मजा है, गाने का जो ओरिजिनलिटी है, वो इट डिसअपियर्स. मजा नहीं आता. आपको गा सकते हो, आप वो 1.5 रिड्यूस करके आप गा सकते हो, लेकिन लोग को जो सुनना है ना उनको. आप अपने आप तो नहीं गाते हो, अपने आप के लिए तो नहीं गाते हो. यू आर सिंगिंग फॉर द ऑडियंस, यू आर सिंगिंग फॉर योर फैमिली, यू आर सिंगिंग फॉर योर वाइफ. तो ये टेक्निकल बात ऐसा है कि आप स्पीड इज रेफर टू एज टेम्पो इन द म्यूजिकल लैंग्वेज. आप टेम्पो को कम कर सकते हो या जास्ती कर सकते हो, क्योंकि ये जो ट्रैक जो है स्लो जा रहा है, लेट मी इंक्रीज इट. ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्पो कम करना या बहुत ज्यादा टेम्पो ज्यादा करना, या फिर बहुत ज्यादा पिच को, स्केल को लोअर करना या स्केल को बढ़ाना is not going to sound good. तो you must have your own range कि मैं मैक्सिमम इसको 1.00 तक चेंज कर सकता हूं, उसके नीचे I don't want to do it. ठीक है ना? That is 1.00 is nothing but 2 semitones. 0.50 is 1 semitone, 1.00 is 2 semitones. ठीक है? So you can reduce that. And for example, I mean, I think it's a free software, so I can easily tell that name. Audacity. 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 I already repeated, Shubhangi madam. AUDACITY. Audacity. It's an English word which means, what audacity do you have to call me by my first name? यानी आपको ऐसा क्या? That's a bad word. I mean, audacity is a strong word, but in musical terms, audacity is a very great, beautiful software, which is an easily, freely downloadable software, which you can download onto your laptop. You can use Audacity to record. You can use Audacity to change the pitch, and you can use Audacity to change the tempo, and etc., etc. Right? So this is the most important input for today. ऐसा नहीं है कि और काफी कुछ बोलने के लिए है नहीं, ऐसा नहीं है. बट आज का जो मेन टेक अवे जो बोलते हैं, आज का जो मेन टेक अवे है वो है कि there are softwares available including Audacity, which is freely and easily downloadable, and by which you can change the pitch and change the tempo and many other functionalities of that song. ठीक है? And so the other takeaway is that आपको karaoke track जब आप YouTube से डाउनलोड करते हो,
तो आपको जरा संभाल के भी करना पड़ता है, बिकॉज YouTube से आप जो भी डाउनलोड करते हो freely, it also downloads certain viruses. It also downloads certain malware जो बोलते हैं, जो सॉफ्टवेयर का जो opposite होता है, which will destroy your computer or which will destroy your software. It can also download certain other viruses and thereby create some risk for you. So kindly be very careful while downloading MP4 or MP3 tracks. This is the other takeaway. The third takeaway for now is that आपको काफी सर्च करना पड़ेगा to satisfy yourself that this is the best track available, and therefore I would like to download it and keep it. Now, why am I always saying download it and keep it? Because अगर आप कोई शो कर रहे हो फैमिली में, या फिर कोई पार्टी में, या फिर पब्लिक में कोई शो कर रहे हो आप, and if you think that चलो हमको सीधा I'm a great savvy guy, I am very computer savvy है, जो भी है, आप सीधा आप YouTube में जाते हो, and then you are selecting that song which is your favorite song or your favorite karaoke track, right? And then आप उसको play करके mic on करते हो, और you're on air, right? You are ready to perform. तो तब जाके क्या होता है कि आपका जो वाईफाई है या फिर कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है, या फिर उस हॉल में अगर कोई क्लोज्ड हॉल है और काफी सिग्नल्स वगैरह वहां पे नहीं आते होंगे, और फिर आपके पास अगर कोई डोंगल या जो भी वाईफाई बूस्टर या जो भी है वो अगर आपके पास नहीं है, तो आपको लाइव प्रोग्राम करने के टाइम पे अगर आप लाइव यूट्यूब में जाके अगर आप प्ले करके अगर आप गाना चाह रहे हैं, तो ये आपको बहुत बड़ा चैलेंज पोज करेगा। बिकॉज एग्जैक्टली जब आपको जब गाना शुरू करना है, तब जाके वहां पे एक वाईफाई का एक जैम हो जाएगा, एंड द ट्रैक विल नॉट मूव। ढूंढते ही रहोगे काइंड ऑफ थिंग, ढूंढते रहोगे, रह जाओगे काइंड ऑफ थिंग रहेगा आपको। वो एडवर्टाइजमेंट में जो आता है, ढूंढते रह जाओगे, तो आपको घूमते रह जाओगे आप, ठीक है ना? तो दैट इज द वन डेंजर। So if you are performing, whether in front of a family, whether for your practice, whether for a public show, or whether for any other purpose, kindly download your tracks and keep it in your folder in the desktop. Organize it by the title of the song. यानी अच्छा तो हम चलते हैं should start with अच्छा A, right? रिम झिम गिरे सावन should start with R, so that it will be in alphabetical order. क्योंकि आपको वो प्रोग्राम करते वक्त कोई बोलेगा सर आप अगले गाना रिम झिम गिरे सावन गाओ, तो अगर आपको ठीक से अगर आपने ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा, तो आपको रिम झिम गिरे सावन को ढूंढना पड़ेगा, ठीक है ना? बिकॉज व्हेन यू डाउनलोड इट, it may not be as per rim jhim gire savan, it could be some video download, or it could have some other wordings XYZ ampersand percentage ABCD, it could be having some name. तो अगर उसी नेम पे अगर आप फोल्डर में सेव करते हो, तो कहाँ ढूंढेंगे आप? कैसा पता चलेगा कि ये रिम झिम गिरे सावन का रिकॉर्ड ट्रैक है, ठीक है ना? तो in your own way you have to edit it and write your own way of writing rim jhim gire savan. Whether you write RIMJIM or whether you write RIMJHIM is your problem. ठीक है ना? So while you want to sing and while you want to have karaoke tracks and etc., rename the title, correct? So that's what I said. Renaming the title, आपको title edit करके XYZ को आपको रिम झिम गिरे GIRE or whatever GIREY or whatever you want, you put it in your language, so that when you have to access that file, you are not left ढूंढते रह जाओगे, ठीक है? And the other thing is that आपको अगर so what I was saying was that's when Jagdish's message came कि आपको रीनेम करना पड़ेगा करके। तो समटाइम्स क्या होता है कि
आपको गाने का शौक है, गाने का इंटरेस्ट है, गाने का जो चाहत है वो भी है, वगैरह वगैरह, आपके पास ट्रैक्स हैं, यू आर वेरी पैशनेट, ऑल दैट इज फाइन, बट आपको आपका जो सिस्टम है, कैरोके ट्रैक्स का जो सिस्टम होगा या कोई फाइल होगा या कोई फोल्डर होगा, तो उसको ठीक से ऑर्गेनाइज करना भी आपका कर्तव्य बनता है. It's a duty towards yourself, that you are an organized person, that you know where your tracks are, you know which track has got 2 versions. ऐसा भी हो सकता है, मेरे केस में ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ है कि मेरा एक जो गाना है वो फुल 3 पैराग्राफ्स का गाना भी है, मेरे पास छोटा वर्जन भी है, शॉर्ट वर्जन यानी 2 पैराग्राफ्स वाला पक्का ट्रैक है मेरे पास. तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइम आई विल सिंग दैट सॉन्ग 2 वर्जन वाला गाऊंगा, या फिर अगर टाइम है तो मैं तीसरा 3 स्टैंजा जो है उसका वर्जन गा सकता हूँ. सो इट इज ऑल डिपेंड ऑन यू. यू कैन नॉट ब्लेम एनीबॉडी. अरे मेरा वो कहाँ गया, वो आई हैड सेव्ड इट. यू सेव्ड इट ना, तो यू सेव इट, यू ऑर्गेनाइज इट. ठीक है ना. सो इट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये सब जो कुछ है, ये चीजें हैं, आपको काफी उसमें ध्यान देना पड़ता है. यू हैव टू इन्वेस्ट सम टाइम, यू हैव टू प्लान एंड यू हैव टू ऑर्गेनाइज. सो दिस इज द मेन जो है मैसेज फॉर टुडे. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स वी आर गोइंग टू कंटिन्यू. ऐसा नहीं है कि सेशन खत्म हो गया है. तो सो एनी इनपुट्स, यानी आपका अगर कोई आपका अनुभव अगर कुछ अलग से हट के है, तो आपका व्हाट आर योर इनपुट्स, व्हाट आर सम ऑफ योर पॉइंट्स दैट यू कैन कन्वे. लेट्स मेक इट अ पार्टिसिपेटिव सेशन एंड लेट्स हियर फ्रॉम पीपल हु आर न्यू. They have all participated in Seniors Have Talent Season 8. So let me call out the name because I know by the very name that they are new. So Ritu Chaudhary ji, रितु चौधरी, आपका क्या होता है अनुभव? आपका जो ट्रैक्स आप कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? आपका कुछ सुझाव है हमारे लिए कि नहीं नहीं मैं ऐसा करता हूं तो आप लोग ऐसा भी करके देखिए, क्या है आपका सुझाव? रितु चौधरी इज एब्सेंट. यानी मैं क्लास भी लेता हूँ, ऑनलाइन क्लासेस लेता हूँ, मैं काफी मैनेजमेंट ट्रेनिंग वगैरह करता हूँ, तो लॉग इन कर देते हैं एंड वीडियो भी ऑन रहता है. हाँ, you are there. Good. So then you have to speak. I'm here. Yes, Good evening. Yes, madam. Yes, madam. Yes. Ritu Chaudhary. So you have actually mentioned in a very precise manner that needs to organize and keep in various folders. And so there's no question. I don't have much experience with karaoke at all. I would love to take it up. So I just thought I'll attend Good, your very good, madam. program. Very good. So, I mean, I'm sure. I mean, that's a spirit. अगर आपको यहाँ से यानी कुछ जानकारी अगर additionally हासिल हो रहा है, तो then I think we are doing our job correctly, right? Yes, very nice of you. I really appreciate it. Oh, thank you so much. Okay, I mean that is not the purpose of asking you to speak, but let's talk to Dr. Sarla Raju Bhai and see उनका क्या मानना है. बोलिए डॉक्टर सरला जी. जी. She won the championship last time. Okay. Yeah. हाँ. अच्छा. मैंने जो बाय किया था वो परसंग कराओके डिजायर. परसंग. हाँ. वो अभी भी है. अभी I can. मेरे पास है और उसमें ज्यादा आनंद आता है. यूट्यूब से डाउनलोड करके जो गाना है और उसको टीवी में लगा के मैं गाती हूँ, तो उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है. जिसमें आपने जो बोला वो स्केल को की को थोड़ा सा लो करना हो या हाई करना हो, फिर वॉल्यूम हमें जो म्यूजिक का वॉल्यूम है उसको हम पहले से ही कम कर रखते हैं और अपनी आवाज जो वॉइस का वॉल्यूम है उसको फुल करके गाती हूँ. हाँ, तो उसमें मुझे ज्यादा आनंद आता है. और मैं फिर क्या करती हूँ, मैं अपने कुछ गाने पहले उसमें रिकॉर्ड मोड में लगा देती हूँ
जिसमें हाँ, हमारा रिकॉर्ड मोड में, हाँ ठीक है, रिकॉर्ड मोड में। वंडरफुल और वंडरफुल, हाँ, हाँ और हाँ फिर जी, मैं उसको सेव कर लेती हूँ, और सेव कर उसका लीजिए, सेव पहले मैं सुन लेती हूँ रिप्ले सुनकर कि बराबर है, तो मैं उस रिकॉर्डिंग को सेव करके फिर वाह, उसको अपने मोबाइल से, क्योंकि अच्छा मेरे पास दूसरा कुछ नहीं है, ये जो मेरे अच्छा, लैपटॉप भी नहीं है, ठीक और है, मेरे पास ऐसा कंडेंसर वाला माइक वंडरफुल भी नहीं है, तो वंडरफुल, मैं उसको टीवी के स्पीकर के पास पे मेरा मोबाइल रख के हाथ में, और जो उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग का जो आता है ऐप, उससे मैं रिकॉर्ड करती हूँ। फिर अच्छा उस रिकॉर्डिंग को मैं इमेज से वीडियो वीडियो विथ इमेज, ऑडियो विथ इमेज का करके मैं अपने एक फेसबुक ग्रुप है ऑल हिंदी वाह रे सॉन्ग, वाह, हाँ उसमें मैं कभी-कभी अपना ये उसको शेयर करती हूँ। वैसे तो उसमें पुराने गाने ही शेयर करने होते हैं, लेकिन उनके जो एडमिन है उनको बहुत अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि जो आप एक्टिव मेंबर है तो आप अपना गाना इसमें रख सकती है। वाह तो रे वाह, उसमें मुझे बहुत ही सबकी सद्भावना और सबकी वाहवाही तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन उनको ये मेरा बहुत अच्छा लगता है कि आप जो भी गाना गाते हैं, दिल से गाते हैं, तो हम सबको ये बहुत हुई ना अच्छा बात, लगता है। ये हुई इसी ना बात। तरह मैं बहुत बढ़िया मैडम, डॉक्टर सरला, वेरी गुड रियली, यानी आप आपका जो और सिस्टम मैंने है अपने, हाँ मेरे पास है प्रसंग भी नहीं गायन। हाँ नहीं तो आई एम रेस्पॉन्डिंग टू व्हाट यू आर हाँ सेइंग, जी, जी जी काफी बाकी लोगों हाँ की बेनिफिट के हाँ लिए, जी, जरूर कि जरूर। मैडम जी, डॉक्टर सरला जो हैं, उनके पास ये है परसैंग सिस्टम है, तो ये जो सबसे पहला था, इट वाज अ पायनियर जी इन द जी कैरियोके जर्नी, तो हमने भी पहले पहले परसैंग ही तो प्रैक्टिस तो परसैंग से ही तो होता था, अभी भी है मेरे पास वो पुराना किट, अभी भी रखा हुआ है। तो हम एक आगे जाके एक सेशन में ये जो सिस्टम्स हैं, यानी परसैंग तो एक हो गया, बाकी हैं, तो ये क्या क्या है, क्या आपको लेना पड़ेगा शुरू में एज अ बिगिनर, कैसे आप परसैंग से काम चला सकते हैं, उसमें क्या क्या एडवांटेजेस है वगैरह वगैरह, ऑल दैट आल्सो वील बी टॉकिंग, यानी वेरी सून, कैसे कैरियोके में कैसे गाया जा सकता है, इसकी जानकारी तो भी हम बात करेंगे, इसके बारे में तो हम बात करेंगे। सो दैट इज अ वेरी गुड इनपुट बाय डॉक्टर सरला, दैट शी इज एबल टू, यानी परसैंग में जो एडवांटेज है हम बाद में बात करेंगे, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि उसमें आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, बिकॉज इट्स अ इनबिल्ट सिस्टम, एक माइक है, माइक के अंदर सब कुछ है, ठीक है ना, तो उसमें जी गाना सर, भी आप सेलेक्ट कर मेरे सकते हैं मेरे फ्रॉम अ पास, पर्टिकुलर। हाँ वो स्टार्टिंग में था माइक वाला, मेरे पास है वो 2 माइक से एक कॉर्डलेस और एक हाँ ठीक है हाँ हाँ excellent, हाँ, that's वो जो okay, पहले वाला जो था उससे थोड़ा आगे एडवांस का है। मैंने समझ गया। हाँ, हाँ, तो परसैंग में ये एडवांटेज है, परसैंग मॉडल में ये एडवांटेज होता है कि क्योंकि हमने अभी अभी बात किया था कि स्केल कैसे कैसे उसको कम किया जा सकता है, या फिर द स्पीड, द टेम्पो ऑफ द गाने को कैसे बदला जा सकता है एक्सेट्रा, उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाहता हूँ कि परसैंग में इट इज देयर, एट द प्रेस ऑफ अ बटन यू कैन रिड्यूस द स्केल and start singing. So that is the advantage of Persang system. And so is the case with the tempo and other such basic settings. So that is an advantage with Persang. Anyway, तो ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग. Thank you for the inputs. Now, okay. Now, अभी क्या है कि एक और ट्रेंड अभी जो YouTube में दिखाई देता है कि काफी लोग आजकल जरा शाना हो गए हैं, यानी बॉम्बे लैंग्वेज में शाना बोलते हैं ना, ये बहुत शाना मत बन, क्या शाना मीन्स यानी जरा स्मार्ट, श्रूड, वॉट एवर इट यू मे कॉल इट, ओके। अभी ये लोग, कोई लोग शाना इसलिए बन गए हैं कि वो क्या करते हैं कि पूरा ट्रैक जो है उसको अपलोड नहीं करते हैं वो लोग, तो लेकिन उनका जो एडवर्टाइजमेंट रहता है जैसे कि पूरा है, उसे डिजिटली
डिजिटली ट्रीटेड ट्रैक है, वो है, ये है, वगैरह वगैरह, तो आप उसको क्लिक करेंगे एंड उसको लाइक्स भी, उसका जो नंबर ऑफ क्लिक्स आल्सो विल गो अप अनफॉर्चुनेटली, बट आफ्टर 1 minute द ट्रैक विल स्टॉप. After 1 minute it will become silent, and then it will say, for full details and for the full track please contact mobile number so and so or email us at so and so, we will provide you the full track. तो ये अभी एक तमाशा अभी शुरू पहले से भी था लेकिन अभी भी हो रहा है. ओके, so some of the good tracks incidentally naturally that is why they also know their value. तो वो लोग अभी जरा स्मार्ट हो गए हैं, तो बोलते हैं कि आपको अगर आपको चाहिए तो संपर्क करिए एटसेट्रा एटसेट्रा एंड थिंग्स लाइक दैट. ठीक है, सो दैट इज वन अदर पॉइंट आई वांटेड टू मेंशन. सो देयर आर ट्रैक्स अवेलेबल. अभी ऐसा भी होता है कि बिजनेस, हाँ सर नेचुरली बिजनेस ओनली, नो इट्स अ बिजनेस, करेक्ट. दयानंद जी नमस्कार, थैंक यू. So there are solo karaoke tracks, there are duet karaoke tracks, both MP3 and MP4, and then there are duet tracks for male singers, duet tracks for female singers. Duet tracks for male singers means that the female voice is embedded by some other singer like you or me. Duet tracks for female singers means that the male voice has already been embedded and you have to only sing your female part because there is a male singer who has already recorded, and that track is available, kind of thing. Many tracks, most of the tracks are not good. Most, that's why I'm using carefully the word most, and I am not giving any percentage ki 90% are like that. Many tracks, if not most, many tracks are bad because either the singer, lady singer's voice is not good or she is not singing properly, or if it is a male singer, then he is also not done full justice. So very rarely you will find some tracks with the male or female well sung, where you can preserve it. And Sriram Iyengar, who is another old friend, says, but they are still very good for practice. Agreed, completely agree. You can practice with that because it is like practicing with a lady singer, however good or bad she may be, or a male singer, however good or bad he may be. So you can practice, you can use it for practice, but if you use it for some show, then they'll say, अरे यार ये कौन female singer कैसे आपने select किया? It is ruining the very effect of the song. उसको जो मजा नहीं आ रहा है, आप अच्छा गा लेते हो, लेकिन what is this यार? Why did you do this करके? Okay, so sometimes that also happens. Okay, now there are also a lot of karaoke based shows. For example, I have a friend in Bangalore. He is a Smule fan. Yani not even fan. He is a Smule mad fan. Smule mad fan. Mahavir ji, namaskar. So he is a Smule mad fan, meaning that anything in Smule, he will be first to go and he will be there present, etc. So he tells me that Smule in Bangalore and in Bombay and other big cities, Smule organizes, or the Smule singers organize themselves a Smule get together, and it runs for full day. Subah se sham, sham se subah. And you can come and go, you can take up the mic, next your chance can come, or you have to log in, or you have to give some number, somebody will keep track of you, saying, sir, aapka number hai 95, so aap khana wana kha ke aa jaiye, no problem, wait kariye, क्योंकि अभी तो नंबर का 20 का चल रहा है, आपका 95 है, तो आराम से आप घूम फिर के बैंगलोर घूम फिर के आ जाइए, no problem. Okay, so there are Smule groups, Smule get-togethers they are called, and so thanks to all these things, thanks to all these developments, हम लोग अभी बाथरूम से स्टेज पे आ गए हैं हम लोग, isn't it? हम लोग सब बाथरूम में गाते थे एक जमाने में, तो वहां से हमने
डाइनिंग रूम के अंदर आया और एटलीस्ट फैमिली ने टॉलरेट किया हमारा सिंगिंग जो है, उसके बाद हम थोड़ा सा ये हो गए, थोड़ा सा, और वी बिकेम लिटिल मोर confident, courageous, whatever it is. Then slowly we started singing for our friends, and then today we have seniors today have talent and all kinds of programs, and so karaoke has really become a blessing. यानी वो सचमुच एक सचमुच, I mean it's really a blessing, I can say. Yeah. Okay, now let me ask another set of questions to my people. Ki last time, Usha, can you just brief me in terms of gaye baar, gaye hafte, how many of them have sung? How many of them participated? Almost all the newcomers. Almost all. Are Almost nahi, all the newcomers have given chance. All the newcomers have been given chance. Vijaya Krishnan was not there last week. Okay. So Vijaya, you are very much there in front of me now. Yeah. Hello, Vijaya hello, Krishnan, sir. would you like to? Yes, please. Would you like to sing for us? Leena Utup was not there last time. हाँ. Arvind Borate. हाँ. Vijay Shimpi. Okay. हाँ, ये लोग हैं ना अभी इस बार. हाँ, ये लोग सब हैं. I mean, whoever is there in front of me only. Wonderful. I think Vijaya is a very spirited lady. I'm sure she should be able to sing. S. Balram bhi, I think he is an old associate. ठीक है. I don't know. So what I'll do, like I organize in my management sessions also. So the first song, or if the first person to go will be Vijaya Krishnan, and the second person can be Vijay Shimpi. Vijay Shimpi. Chalo, now I'll leave it to Usha now. Okay. So the second singer will be Vijay Shimpi, so that Vijay Shimpi can be prepared. Yeah. अच्छा, मेरा गाना अभी अगले बार आएगा, यानी अभी कोई और गाएंगे करके. ठीक है. Absolutely right. क्या मैं एक सवाल पूछ सकता है? हाँ, जरूर सर. दयानंद जी पूछिए सर सवाल. दया करिए. दया करिए. हाँ जी. और हमें आनंद दीजिए. हाँ जी, हाँ जी. नाम ही है, मेरे माँ बाप ने रखा है दया और आनंद. फ्रेंड्स मुझे दया ही बोलते हैं. तो क्वेश्चन ये है कि आपने जो स्म्यूल का बोले, हाँ सर. वही बारे में एक स्टार मेकर पे एक ग्रुप है, वो उन लोग का मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे वो इवेंट रहता है. 3 दिन का इवेंट रहता है. तो जैसे मंडे को गजल रहता है और ड्यूट रहता है ट्यूसडे को, और वेडनेसडे को कौन सा भी गाना. लेकिन वेटिंग में वो लोग जो एंकर रहते हैं, वो वेटिंग में तकरीबन 40 मिनट के 2, बाद में फ्री स्टाइल पे 20 मिनट 10 मिनट के 2, ऐसे यानी तकरीबन 2 घंटा जाता है. 30 लोग ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो लोग का बाद में रिजल्ट बताते हैं. और वो पूरा सब टाइम खत्म होने तक 2 बजता है दोपहर का. ठीक है. मैंने एक दो बार उनसे पूछा, ये हमारा टाइम आप वेस्ट कर रहे हैं, हमें गाना भी नहीं देते और आप 40-80 मिनट और बाद में 10-20 मिनट, यानी तकरीबन 2 घंटा हमारा वेस्ट करते हुआ वापिस रिजल्ट के टाइम भी वही होता है. हाँ, नहीं तो मेरा ये सवाल है कि तो फिर इतना वेस्ट होता है तो आप जाते क्यों हो वहाँ? नहीं. मैं लास्ट में लास्ट वीक यानी मंडे को बोला मैं आया और मेरा टाइम वेस्ट किया, अभी ये आइंदा मैं नहीं आऊंगा. बस खत्म सर. That's all. I mean, you have answered your question, right? हाँ जी. प्रकाश सिंह केवल रमणी सर, नमस्कार, सत श्री अकाल. चलिए सर, आप निकलिए, आपको बस पकड़ना है, नो प्रॉब्लम. चलो भाई, ठीक है. थैंक यू. ठीक है. एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम. थैंक यू. यानी आप बोल रहे हैं कि स्टार सिंगर में ऐसा होता है, लेकिन इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. ठीक, वेरी गुड. So that's a good lesson for everybody. Absolutely. ठीक है. So now we shall listen to Vijaya Krishnan. Okay. Good. That's a spirit I like. Which song are you wanting to sing? Can you hear me? Can you hear me? Very, very well. Okay. Very well. It's a song from Kabhi Khushi Kabhi Gum. Okay. Okay. I've been playing around with all these recordings. I record from here, from there. Not good. Lakshmi. Can we pin her? I'm just trying to pin her.
Where is she? Yes. Yeah. Ah. मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। मेरी सांसों में तू है समाया, मेरा जीवन तो है तेरा साया। तेरी पूजा करूं मैं तो हरदम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहां भी देखे तुझको ही पाए। ओ, सुबह शाम चरणों में दिए हम जलाए, देखे जहां भी देखे तुझको ही पाए। इन लबों पे तेरा, बस तेरा नाम हो, इन लबों पे तेरा, बस तेरा नाम हो। प्यार दिल से कभी भी ना हो कम, ये है तेरे करम। कभी खुशी कभी गम, ना जुदा होंगे हम, कभी खुशी कभी गम। Yeah, that's it. I don't want to bore you too Good. much. Very nice. No, it's not a question of boring. Why do you think like that? See, incidentally, it's good, very good. I like your spirit because you never said, no, I will sing later. After 2 songs, give me a chance, sir, and all that. So that's really nice of you. And would anybody else like to give her some feedback or comments? My voice is not strong. It's not coming, like I sort of struggle Fine, with it. as it should. Okay, fine, no problem. But it was pretty good, audible. Very good Yeah. it was. Exactly. Very good. Good. Okay. Very nice. Very And nice. I just have to say something not related to what we discussed today. There are 2 points I need help with, First of all, Okay. I have a +1 mobile, okay? And I have never been able to find a microphone that is compatible. It's got a type C here. Yeah. Type C, it's a OnePlus mobile, and I'm not able to find any microphone that I can. Vijaya, today most of the phones are all type C. Right. So Right. I But the bought point 1 or is- 2, but they're useless, from Amazon and all that. No. So what are you talking about microphone? To attach to your mobile? Yes. Yeah, to attach to this and then sing, like to enhance the sound. No, so you have to look for a microphone, which is actually a USB micro, in the sense, a microphone which is C-type. I think it should be available. I've tried, I bought one, but they all say yes, but it doesn't. And then somebody said, there isn't one really good available for one. Available, okay. I'll try and find out. Are you based out of India? No, in Noida, in UP. Oh, in Noida, is it? Okay. Oh, I thought. The other thing is, No, in this music actually, if you continue to, attend these sessions, Vijaya, he'll I be know. covering Yes, all I these did. topics. Yeah, actually, Usha is right. I like the same side goal that Usha has. See, for I us, sang in Season-3 a long time ago, and I just forgot. I was busy with other things, and I didn't win, but I thought, but it's good. And then from there, I sort of been practicing and making my voice stronger and stronger. That's all I can do, practice. It gives me joy anyway. And for this music that I did for your Kabhi Khushi Kabhi Gum, it was a long music, but I tried to chop it and paste. And for that, I need your advice as to which program will be good, because I just
played it on the laptop and I recorded it, So, and then something I did, but it's not ideal. So no, so therefore, like what Usha had said, I really appreciate her for that. All these questions will be answered. Good. Jate jate. Okay, good. Okay, great. Aage jaake, yeah. So because that's the very purpose of this program. I mean, not only to provide guidance or whatever, but also to like discuss technical issues like this and all of that. Yeah. Good. Thank you very much. And the only advice I need to give you and many others is that, like, the first thing you said after you sang was that I'm stopping here because I don't want to bore you. I think you should never be apologetic. Never be apologetic. This is true of public speaking. This is true of anybody standing up to speak and say, I want to say a few things, but I hope I'll not bore you. Means then you're already preparing my mind to get bored. And that's the wrong thing. No, that's a wrong thing to say, really. I mean, I hope you won't mistake me for this. No. Never be apologetic. Never be apologetic. Okay. Yes, your throat may not be all right. That's okay. That we always say that and say, jara gala baith gaya hai and all that. But that's okay. Yeah. But good. Thank you very much. Thank you, Vijaya. Thank you. Appreciate it. The next is Vijay Shimpi, sir. Vijay Shimpi. But before that, I think somebody wanted to ask some question or something in the chat. He only put up his hand also. Vijay ji, I think Lax sir wanted to ask something. Oh, is it? Okay. Lax? About false voice or something like that. Okay. Acha. He's put it in the... He's put it in the... Yeah, he is there. Ma'am is there. Yeah. I can see ma'am. Yeah. Maybe she must have put. Lalita is there. So Lalita, you want to say something? You put the chat item or what? Or your husband put it? You have to unmute. Unmute. One second. Good evening. Good evening, Sharma ji. Husband is busy with his programs. I know. I am here. I just wanted to know what this falsetto is. Falsetto is sometimes using a secondary voice. Like sometimes I do that, meaning I like to practice a song first in my lower voice. Like for example, I do, if I were to practice a song like, any song. I'm not able to quickly think of Lalita ma'am, I normally sing in my original voice, which is not, which is very strong. But if I continue to sing, Aaja, ai bahar dil hai, bekararon mein, Rajkumar, tere bin raha na ja. It sounds so nice, Usha. It is nice. But you don't sing in that voice at all. Many times, generally it is Rafi Saab songs. They don't suit a female voice because the scale is very high. Yeah. So whenever I sing for their online mehfils and all, I get remarks saying that your falsetto is very good. Now I don't understand what that falsetto is. Oh, that means your false voice is sounding better. Like it is the reverse of Usha Jacob. It is just the reverse of Usha Jacob. It's just the reverse. So you are two sides of the same coin. Okay, so what I sing is not my original voice. Not singing in your original voice is a false voice. No, see, now what you're talking, in the same voice you should sing. That is your original voice. Okay, but don't you think this will be in a very, very low scale for all the songs? It will not be because of your classical background. Maybe you feel like that, but I guess it should sound good. Okay, let us try. Yeah. Vijay Shimpi, sir, please. Yes, sir. I'll pin you. We'll bring you into the center stage. Yeah. Yes, sir. सर आपको पहले अनम्यूट करना पड़ेगा सर, नहीं तो हमको कुछ नहीं सुनाई देगा। सर आपको अनम्यूट करना पड़ेगा विजय शिम्पी जी। आपने वीडियो ऑफ कर दिया, ऑडियो ऑन करना था। विजय। Yes. हाँ सर, आइए सर।
Start करिए, शुरू से करिए. The thing is that I will be singing for the first time. I don't know how to mix the karaoke music with this. बाद में. कोई बात Now- नहीं, हम सब अमेच्योर्स हैं यहाँ. यानी अभी हम लोग डिनर में सूप पी रहे हैं सर, सूप. Okay, ठीक fine. है ना. उसके बाद वो पहला जो फर्स्ट कोर्स आएगा, उसके बाद वो मेन कोर्स आएगा, उसके बाद डेजर्ट होगा, उसके बाद पान होगा सर. Okay, fine. So just I will try my. Please forgive me for my. Again, don't start with Forgiven. apologies. All right. मुझे माफ करिए. No. I am sorry. This is my. नहीं, आप गाइए ना सर. We are waiting to hear you ना सर. Right. We are all here only to hear Right. you. Right. Next is Leena ma'am. Next is Leena I will ma'am. start now. Sure. Next is Leena ma'am. Yes. मन रे वाह. तू काहे न धीर धरे ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे मन रे तू काहे न धीर धरे इस जीवन की चढ़ती ढलती धूप को किसने बांधा रंग पे किसने पहरे डाले रूप को किसने बांधा काहे ये जतन करे मन रे तू काहे न धीर धरे उतना ही उपकार समझ कोई जितना साथ निभा दे जन्म मरण का मेल है सपना ये सपना बिसरा दे कोई न संग मरे मन रे तू काहे न धीर धरे ओ निर्मोही मोहन जाने जिनका मोह करे मन रे. Thank you, sir. नहीं, like Shubhangi's madam has messaged already that selection of the song के लिए आपको पूरा मार्क्स तो देना ही पड़ेगा. यानी गाना तो क्या कहें सर, गाने के बारे में क्या कहें, नथिंग बियॉन्ड वर्ड्स. लेकिन आपको प्रैक्टिस तो काफी करना ही है. प्रैक्टिस एंड जो स्केल वेरिएशन रहता है ना कि एक ही गाने में राइट तो आप एक ही इसमें गा रहे हो तो मे बी दैट वो वेरिएशन लाना पड़ेगा. आपको काफी सुनना पड़ेगा. 10, 12, 20, 40, 50, 100 टाइम्स यू हैव टू हियर द सॉन्ग सर. उसको पूरा आपको आवाहनम करना पड़ेगा. उसको क्या बोलते हैं, उसको आवाहन करना पड़ेगा आपके अंदर. सचमुच सर. और ये जो गाना है ना, ऐसे जो गाने हैं चांस एट ऑल, एब्सोल्युटली, ये तो आपको तो पूरा इंटरनलाइज ही करना पड़ेगा. बट गुड सर, आई रियली अप्रिशिएट योर स्पिरिट. आई वांट टू अपलॉड यू फॉर इट. Very nice. Keep it up, sir. Keep it up. Voice is very nice. Voice is good and starting was very nice. This is the song of the century, actually. Isn't it? It is adjudged the song of the century. Just imagine, song of the century. Century. बाप रे बाप रे बाप रे. I like this song
So much that So much. so much that I don't have adequate words to explain it actually. Absolutely. वही तो है ना, हमारे सबका यही तो हालत है सर. Yes, ठीक yes, है ना? yes, yes. Very nice. And Thank Vijay you, Mr. Shimpi Vijay. sir, I'll request you to lower your hand. हाँ, आपका जो And, हाथ ऊपर उठा है उसको जरा. Yeah. Okay. Then we'll have. Leena ji next. Leena ji next. We have all heard of Usha Utup. So first question to Leena ji will be, कोई Next. connection, कोई संबंध है क्या? No. No. Okay, fine. Thank you. I practiced a song as per your suggestion, that is Saranga Teri Yaad Mein. Wow. So So I nice. played with the karaoke. I've been practicing for some time now, 2-3 months. Wow. Such a We have a sincere group student. that you are. practices, but I thought I'll get Such some a- professional help from such a you. That's sincere why we are student, part of yeah, the A to Z group. Okay. So Such I'll a just sincere play. student. you are. The next song will be by Colonel Ramesh Ramaiah. Okay. Is he come back? Just check that. Yeah, he's come back. कुछ दबा नहीं, दबाना पड़ेगा, बताओ दूर से बात. Leena ji, BGM can be a little louder. सुनाई नहीं दे रहा है. Yeah. Is it better? सारंगा तेरी याद में, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन, मगर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं दिन, सारंगा तेरी याद में. वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, वो अम्बवा का झूलना, वो पीपल की छाँव, घूंघट में जब चाँद था, मेहंदी लगी थी पाँव, आज उजड़ के रह गया, आज उजड़ के रह गया, वो सपनों का गाँव, सारंगा तेरी याद में, नैन हुए बेचैन, मगर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, वो सारंगा तेरी याद में. Good attempt, Leena. आपको like in the previous case also, आपको यानी we have to practice it and listen to it. In fact, you know what I do? मैं क्या करता हूँ कि and sometimes it feels good also कि I put the original song. मुकेश जी का जो सारंगा है, I will put it and I will sing along with it. Like a karaoke. I will pretend Mukesh ji's song is voice is not there. Yeah. तो क्या होगा? Then you will know. अच्छा, oh Mukesh ji यहाँ पे is going like that. I have to also. So you know where you are lacking. You know where you are not doing that whatever little bit. Or in terms of tal also, you know.
सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेचैन हो, मधुर तुम्हारे मिलन बिना दिन कटते नहीं रैन, oh saranga. So when you are singing with him, then you realize they were singing with the original, not even track. So that is another technique or method, you can say, कि when we sing along with the original song, then it's a good feeling. You feel कहाँ पे छोड़ना है, कहाँ पे पकड़ना है, all that, very nice. But lot of practice is required, Lina. Lot of practices. Yeah, we should be listening to the song several. हाँ जी, अरे बाप रे, I am known for group, the person who leads us tells us 10 बार कुछ भी नहीं होता, 40, 50, 100 बार सुनो फिर बताओ. तो मैंने भी अभी वही बताया था कि 10-40 बार नहीं, 100 बार भी सुनो, And with the result, even at home, my wife says, "अरे, how many times are you going to listen to it?" So I said, नहीं, मेरे को वो जगह पे पकड़ना है. He is doing it differently. उस जगह पे I want to sing along with him and do it like him. So that is also a kind of this Sharma sir has been repetitively telling so many times in every such much. क्योंकि see, we are all not professional singers. We are all learning to sing, or some of us sing a little bit, whatever it may be. So so then so we need to keep on practicing. Because our voices started getting trained only now, na? 50 साल से तो अब चुप रहा वो, isn't it? So now we are trying to train the voice. So it and sometimes we've even learned it wrong. We never listened to it fully. Sorry? No, sometimes what happens is we would have been singing just the Mukhada for years together and we remember vaguely only. And then we'll go on to learn the Antara and all, then we get caught. अच्छा, इसमें गाने में इतना कुछ है करके. Correct. नहीं, sometimes we'll be singing the wrong tune and that would have got embedded in our brain. Yeah, that too. And the same thing repeats when you sing it. Try to sing it now in the correct format. Incidentally, Usha is very right. There is one song in my case where I thought that the word was like this, and now I realize, arey, what a big mistake I was making. And it is set in our mind. It's set in our mind, na? कि हमको गाते गाते it has become a habit. So then we use that word in that sense only. लेकिन original में जाके देखा तो it's quite different and all that. Yeah, that's also very true actually. Very nice. Thank you, Usha ji. Thank you. Next is Colonel Ramesh sir. Lina, where are you Ramesh based Ramaiah. All the others, please mute yourself. That's better. Tell me, Lina, where are you from? Where are you currently? I'm a Malayali, but settled in Chennai, born and brought up in Delhi. So where am I from? I don't know. I'm in Chennai now. Yeah. Retired. Manslai. Okay, so you are in Chennai now, is it? So we must catch up then. Yeah, actually, he's also in Chennai. Because how can Bangalore have its own group? Bombay is going to have its own group, and how can I in Chennai not have our group? I'm going to have Chennai group. Most certainly. Okay, where do you stay in Chennai? Velacheri. Okay, fine. I'll catch up with you. Yes. Okay, Lieutenant Colonel Ramesh Ramaiah. All the rest of you, please mute yourself. Yeah. Actually, we have about 6 minutes to go. So after Ramesh Ramaiah, Arvind Borate is the next. But possibly we'll take him next time. That is also another way. Yes, Thank Ramesh. you, sir. Nice seeing you all after a long time. Same here. I just switch on the track. Just let me know the audibility. Sure. प्रकाश जी, आप गए नहीं, बस पकड़ना था आपको. ठीक है. No, he is in the vehicle. अच्छा. I'm in bus. It will leave by 8 o'clock. 1 second. Sorry. Where is Ramesh ji? I'm not able to locate him at all. Just one. I want to pin him. Yeah. He is there, Sharma ji. मुझे दिखाई नहीं दे रहा है. दिखाई दे रहा है अच्छी तरह मुझे. He is invisible to me.
रमेश जी खड़े हुए हैं। खड़े हैं वो, हाँ। लाल शर्ट डाला है। But where is he? I'm not able to view. He's doing the remote. नहीं समझ गया, but कहाँ गए रमेश जी? कौन? अरे Is the track audible, Sharma? Not fully. no. Not it? I'll just shift the laptop closer to you. हाँ जी. From the TV, YouTube. ठीक है. अच्छा अच्छा. Is it okay? चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, Volume. फिर भी कभी अब शाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे। दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू। दर्द भी तू, चैन भी तू, तरस भी तू, नैन भी तू। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूंगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा।
वाह कर्नल साहब, everybody saluting you यार. कर्नल साहब, everybody saluting you. रमेश जी. Thank you. Really, because everybody knows it's a no-brainer actually. यानी अगर आप ये गाना सेलेक्ट करके गाना शुरू करते हो तो everybody क्या बोलते हैं उसको, expectation is चलो देखेंगे. अभी जब अंतरा आएगा तो देखेंगे कि how does he handle Mitwa, isn't it? So that was very well handled. Thank you. Thank you. I'm Very well honored. handled. And I'm also honored. ये गाने में क्या है कि first of all आपको सैल्यूट करना पड़ेगा इसलिए कि आपने ये गाना सेलेक्ट किया. Because courage होना चाहिए. Thank you. Thank you, Sharma Sahab. Such much. I mean, it is true of the song. That's very high pitch. Exactly, that Mitwa was the trump card of this song. Trump card, and if you are doing that litmus test of Mitwa, then you are through. You are through, isn't it? So it requires a lot of energy, and it's a very intense song. यानी पूरा वो जो चाहूंगा मैं तुझे से लेके आवाज मैं न दूंगा तक, after it is there after every both the stanzas. It is like repeating the full mukda after the first stanza, again full mukda after the second stanza. So it's a very breathtaking. There's no gap at all. Not in that breathtaking sense, but take breath at all. breath intensive song. And So, the last part also, the last one. आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा. That one. ये रफी साहब के गानों में यही तो स्पेशलिटी रहती है कि एक ही वर्ड और उसको चार स्टैंजा हो तो चारों में अलग. Absolutely. So it's a great effort and really good. Thank you. And जितना हम ज्यादा practice करते हैं, this song will become that much more like old wine, you know. It becomes better and better with every practice, and you can possibly deliver it on the stage in January in Bangalore when we have A to Z of Bangalore group का जो show है. We are planning a Bangalore A to Z group in Bangalore in January, and Colonel Ramaya and Usha are taking the lead, and we have already booked the hall, etc., etc. Anyway, sorry, Jagdish wanted to say something. Yeah, I agree with what everybody has said about the song, about the intense song and all that. At two places, the ucharan of awaz was not proper. It was awaj. Awaj. So that has to be taken care of. I couldn't hear it properly. Correct. Good. Very good. Otherwise, it was a wonderful song. Awaz. I'll make a note. Obviously. Because that's the first word almost. And agar ucharan, I mean, we have spoken enough about ucharan. बाद में भी बात करने वाले हैं, but pronunciation is the most important thing because it can put off the audience. कि बोलता है अच्छा गाता है यार लेकिन अपने को नहीं उच्चारण ठीक नहीं है. I don't want to listen. So they switch off mentally. Okay. So anyway, this is just one word, Colonel Saab, not an issue. And ठीक है. So very Thanks good. for all the generous appreciation. अरे जरूर यार. Thanks to all of you. Generous. Yeah, sure. So Shubhangi ji is a very cheerleader. हाँ Shubhangi ji आपको बहुत धन्यवाद. You seem to be a cheerleader for everybody. She sang very well last week. She sang very well. Very and well. She praises and encourages everybody. Yeah, she sang very nicely. I loved the first song, no? Very nice, Shubhangi. You sang really very well. Thank you so much, ma'am. Thank you so Very much. nice. So nice. Good to have such a spirited participation from She has everybody. a sweet, beautiful voice also. She sang very well. Excellent. Very nice. Sir, Good. Very good. Sir, Very good. Sir, can I ask one question? पूछिए ना. Why regarding- hesitate? Thank you. Can I ask? Why do you say can I ask? Thank you. Because now the time is short, no? So I'm the last. That's why, sir. 8:04 हो गया So है. just We a have actually. request. Yes, sir. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. बताइए. So you told us that about the speed. तो वो 0.5 का जो मैथमेटिक्स जो बता रहे थे, थोड़ा सा मुझे ऐसे कुछ समझ में नहीं आया. Please. समझ में आने के लिए कुछ है ही नहीं उसमें. Okay. ये ऐसा है कि अगर आप ऑडेसिटी में जाते हो, ऑडेसिटी जो सॉफ्टवेयर है उसमें अगर जाते हो, एंड देन यू पुट अ ट्रैक इनसाइड, यानी ड्रैग एंड ड्रॉप
के बेसिस में अगर आपने वो स्क्रीन पर बोलता है कि ड्रॉप योर सॉन्ग हियर और ड्रॉप योर ट्रैक हियर, तो आप जब ट्रैक आपको ड्रैग करके आप जब ड्रॉप करते हो एंड देन यू गो टू द टॉप ऑफ द मेनू जहां पे लिखता है इफेक्ट्स, यानी आपको क्या इफेक्ट चाहिए, एक को ज्यादा चाहिए क्या क्या चाहिए आपको। सो उसमें अगर आप ड्रॉप डाउन करेंगे तो उसमें नीचे आके देखेंगे कि चेंज पिच। ओके, हाँ, चेंज पिच। तो अगर आप चेंज पिच में जाते हो तो बाय डिफॉल्ट इट changes to the lower level because everybody wants to change the pitch to a lower level only. Nobody is going to say नहीं मैं मोहम्मद रफी से भी ज्यादा पिच में गाने वाला हूँ, ऐसा कोई nobody wants to prove to the world anyway. Okay. Yes sir, अरविंद जी सॉरी टाइम हो गया है, तो आई थॉट आप अगले बार गा सकते हो जरूर, आपका पहला नंबर है सर नेक्स्ट टाइम। थैंक यू अरविंद बुराटे जी। तो मैं ये कह रहा था, तो व्हेन यू ड्रॉप द थिंग एंड डू द चेंज पिच automatically it will reduce by 0.5 only. Oh, okay. by default. अभी अगर आपको वो 0.5 से ज्यादा ही करना है तो आप उसको उसमें यानी 0.5 जहां पे लिखा होता है उसमें जाके आगे पीछे कर सकते हो। यू कैन मेक इट 1 और यू कैन मेक इट 0.75 और यू कैन मेक इट 1.25 वट एवर इट इज। ऐसा कोई मैथमेटिक्स इसमें है ही नहीं, क्योंकि मुझे भी मैथमेटिक्स आता नहीं है। And what about the speed also? We can कम ज्यादा कर तो उसमें तो मैं ये अगले बार ये बोलने वाला था, यानी बताने वाला था कि वी डोंट से स्पीड। स्पीड होता है ट्रेन का या व्हीकल का, तो ये ट्रैक का होता है टेम्पो। ओके। But incidentally in Audacity speed is a separate setting. I have never gone and touched that anyway. टेम्पो भी है स्पीड भी है, बट आई हैव नेवर टेम्पो हमें ध्यान में रखना होगा। ओके। हाँ, बट अभी मैं आज रात को बैठ के एक हसीन शाम को दिल मेरा खो गया, उसमें आई वांट टू इंक्रीज द टेम्पो बिकॉज आई फाउंड अ वेरी गुड ट्रैक वेयर आई फाइंड दैट आई हैव टू सिंग लिटिल फास्ट। मुझे जरा ओरिजिनल के हिसाब से आई वांट टू स्लो डाउन द ट्रैक। आई वांट टू स्लो डाउन द ट्रैक, तो मैं टेम्पो को कम करने वाला हूं मैं आज रात को। ओरिजिनल के भी थोड़ा सा हम कम करके गा सकते हैं। क्या चीज? सॉरी आई डिडंट गेट यू। ओरिजिनल के भी ऐसे कम करके गा सकते हैं। हाँ, यानी जैसे श्रीराम अयंगार जी ने बताया था, फॉर प्रैक्टिस पर्पसेस यू कैन डू, बिकॉज आपका जो गला जो है यानी आपका जो रेंज जो है वो फिट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये चाहूंगा मैं तुझे, if I am given a choice, I'll reduce it by at least 1. One से तो ज्यादा मैं करना नहीं चाहूंगा, but I would reduce it by 1. That means 2 semitones. 2 into 0.5. Okay, got it. करके I will sing and practice, but after that I will try to increase it to 0.5, not 1. I will try to go back to the original. And again उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह करने के बाद मुझे ऐसा कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं वो मितवा जो है I can handle that correctly. Then I'll go back to normal original. अगर नहीं हो पाया तो ठीक है 0.5 में रखो आप। ऐसा कुछ ऑडियंस इतना डिसर्निंग नहीं है कि अरे इसने पिच चेंज किया है लगता है एंड ऑल दैट। 0.5 में कुछ फर्क नहीं पड़ता, बट अगर आपने 1 या 1.5 वगैरह कर दिया तो ऑडियंस विल फाइंड आउट ज्यादा, अरे ये गाना क्या इतना नीचे गा रहा है, तो ऊपर उठाना था उसको वगैरह वगैरह। ओके, ठीक है ना? गुड, वेरी नाइस शुभांगी जी, थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीबडी फॉर देयर पार्टिसिपेशन। एंड मुझे अच्छा लगा, आनंद आ गया, जैसे डॉक्टर सरला जी बता रहे थे, मुझे आनंद आ गया आज। एंड दिस इज आफ्टर लेक्चरिंग फॉर 6.5 hours टुडे इवनिंग, टुडे होल डे। तो मैं यहीं पे क्लाइंट के यहीं पे बैठा हूँ, दे विल बी थिंकिंग ये कौन सा आदमी है यार, ये गाना भी गाता है और लेक्चर भी देता है वगैरह वगैरह। सो आई होप नोबडी इज लिसनिंग। पूरा हॉल सामने है, मेरा एक कैबिन दोस्त का कैबिन था ये, तो आई थॉट आई विल। सो थैंक यू वेरी मच। एनी कॉमन फैक्टर इन दीस टू ग्रुप्स? वो हर जगह की मेलोडी रहती है, इसलिए सब प्यार से सुनते हैं। वहाँ पे मैनेजमेंट के लेक्चर भी इसीलिए प्यार से सुनते हैं कि उसमें भी मेलोडी होती है। दोनों में बहुत मजा आ गया सर, दोनों में बहुत मजा आ गया आज। बिकॉज समटाइम्स यू नो, जब दिल से, जैसे डॉक्टर सरला जी बता रहे थे ना, जब आप दिल से कुछ करते हो ना तो आपको आनंद तो जरूर आएगा ही, और जब आपको आनंद आता है तो औरों को भी तो बहुत ही आनंद आएगा।
I hope it is the same with you all also. Thank you very much. Thank you, Lakshmi. Yes, Thank you so much for software का नाम क्या है? बहुत धन्यवाद. Thank you very much. Wonderful, wonderful. Thank you so much. And thank you, seniors today. Thank you, Archana ji, for this beautiful. Thank you very much. Next week onwards, it will be back to 5:30, please. Next week onwards, it will be back to 5:30. Okay. Thank you very much. And Arvind Borate ji be there next week. जरूर. शर्मा जी, वो सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? प्लीज. Audacity, sir. A-U-D-A, D for Delhi, A. Right. City. Okay. Honda City का जैसा Audacity. Audacity actually means तेरी ये जुर्रत ऐसे बोलते हैं ना. तुम्हारा ऐसे कैसे जुर्रत हुई कि आपको ये प्रश्न उठाते हुए? What audacity? You have to ask me this question. Audacity is जुर्रत. Got it. I got it. Thank you very much. यहाँ पे ऐसा बोल सकते हैं कि what audacity you had. I am too happy to help you. Exactly. So that's the difference. Thank you. Bye. Good night. Thank you, everybody. Bye bye. Thank you, everybody. Thank you, Sharma sir. Thank you.